Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal. Today we will discuss about maxillofacial trauma, soft tissue injuries. This lecture focuses on facial soft tissue trauma. No other part of the body is as conspicuous, unique, or aesthetically significant as the face. Because as an individual's self-esteem, self-image are often derived from his or her own facial appearance, any injury affecting these features requires particular attention. Patients with traumatic facial injuries often present with extremely disfigured appearance. Soft tissue injuries include abrasion, laceration, and contusion. We will discuss one by one in a brief detail. Abrasion. Abrasion caused by the friction violence due to friction between an object and surface of the soft tissue. It is presented as a raw bleeding areas. The wound is superficial and denudes the epidermis, occasionally involves the deeper layer. Abrasion involves the terminal nerve endings of many nerve fibers and it can be quite painful. Abrasion may be contaminated, depends on the surrounding. Abrasion injuries most commonly occur when exposed skin comes into moving contact with a rough surface, causing a grinding or rubbering away of the upper layer of epidermis. जब भी आपका स्किन किसी भी रफ सरफेस के दरमियान कांटेक्ट में आ जाए और आपकी एपिडर्मिस को या अपर लेयर को वो बिल्कुल वेयर आउट कर ले, रिमूव कर ले, दिस इज कॉल्ड एब्रेशन. An abrasion is a partial thickness wound caused by damage to the skin and can be superficial, involving only the epidermis, to the deep, involving the deep dermis. अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास इसने एपिडर्मिस को रिमूव किया है या डर्मिस को भी साथ साथ इन्वॉल्व किया है. Abrasion usually involve minimal bleeding, like mild abrasion and deep abrasion. Two types. Mild abrasion, also known as graze, are scrapes on the skin which do not scar or bleed because the dermis is contact. But deep abrasion that disturb the normal dermal structure may lead to the formation of scar tissue. अब दो किस्म के हैं हमारे पास एब्रेशन. या तो आपके पास सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा तो उसमें ब्लीडिंग, मिनिमल ब्लीडिंग, बहुत कम ब्लीडिंग होगी, पेन इतना ज़्यादा उसमें नहीं होगा, उसको हम ग्रेज कहते हैं और स्क्रैप कहते हैं, और कोई स्कार फॉर्मेशन उसमें चांसेस नहीं होती. अगर डीप लेयर इन्वॉल्व कर ले, मींस डर्मिस को इन्वॉल्व कर ले, तो उसको हम फिर डीप एब्रेशन कहते हैं, जो कि डर्मल स्ट्रक्चर को वो डिस्टर्ब करती है और दैट में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार एंड उधर चांसेस होती है ब्लीडिंग की. अब एब्रेशन में भी कंटामिनेटेड, डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स. अब सराउंडिंग पे वाकई डिपेंड करता है. अगर सराउंडिंग में ऐसी कोई पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली वो कंटामिनेट हो जाती हैं. दिस इज द डायग्राम विच क्लियरली शोज द एब्रेशन. अब एब्रेशन की अपनी कुछ डिग्रीज हैं. अ फर्स्ट डिग्री एब्रेशन, अ सेकंड डिग्री एब्रेशन एंड अ थर्ड डिग्री एब्रेशन. द फर्स्ट डिग्री एब्रेशन विच ओनली इन्वॉल्व्स epidermal injuries, or you can say epidermal injury. Second degree abrasion involves the epidermis as well as the dermis and may bleed slightly. Second degree. Third degree abrasion involves damage to the subcutaneous layer and the skin is often called avulsion. इसको हम avulsion भी कहते हैं कि जब आपके पास subcutaneous layer को भी वो clearly remove कर दे तो उसको हम third degree abrasion में डालते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें, एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको माइल्ड एंड डीप एब्रेजन की बता दी, क्लासिफिकेशन मैंने डिग्री ऑफ एब्रेजन का आपको बताया कि फर्स्ट डिग्री एब्रेजन क्या है जिसमें सिर्फ एपिडर्मल इंजरीज होती है. सेकंड डिग्री ऑफ एब्रेजन क्या है कि इसमें डीप लेयर को मींस के डर्मल को भी इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें स्लाइटली ब्लीडिंग होती है. एंड थर्ड डिग्री एब्रेजन में जब आपके पास सबक्यूटेनियस लेयर को भी साथ साथ वो इन्वॉल्व कर ले तो उसको हम थर्ड डिग्री एब्रेजन और यू कैन से एवर्जन कहते हैं. फर्स्ट डिग्री आल्सो कॉल्ड माइल्ड एब्रेशन, सेकंड डिग्री आल्सो कॉल्ड deep abrasion and third degree also called deep abrasion as well as avulsion.
ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए एब्रेजन की। तारुफ क्लीजिंग विद परफ्यूज सलाइन irrigations, removal of the foreign materials, gentle scrubbing with the soft brush to remove sticky materials to prevent tattooing. Use of surgical soap is required to be done prior to dressing. Topical application of antibiotics ointments with compression dressing promotes good healing. Superficial abrasion can be covered with topical antibiotics application and left open. These are the points which aids in the treatment of the abrasion. The abrasion should be cleaned and any debris must be removed from the affected area. अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स हो तो सबसे पहले हम उसको परफ्यूज सलाइन से उसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं प्रॉपरली। फिर जितनी भी फॉरेन मटेरियल्स हो उसको रिमूव करते हैं एंड जेंटली स्क्रबिंग उसलिए ज़रूरी है सॉफ्ट ब्रश के साथ। अगर कोई स्टिकी मटेरियल्स हो तो उसको रिमूव कर दे कि वहाँ पर टैटूइंग या स्कारिंग ना हो। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आइंटमेंट्स विद कंप्रेशन ड्रेसिंग, जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पर हीलिंग प्रमोट होगी। And superficial abrasion can be covered with the topical antibiotics application and left open. अगर superficial है तो वहाँ पर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगा के उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर डीप है तो फिर उसके लिए समटाइम्स सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। A topical antibiotic should be applied to prevent infection and keep the wound moist. Dressing the wound is beneficial because it helps keep the wound protected, providing a moist environment for healing. If the abrasion is painful, a topical analgesics can be applied, but for larger, you can say for deep, a systemic analgesic may be necessary. अगर अवॉइड करेंगे कि सन को वो एक्सपोज ना हो, क्योंकि जितना वो उसको इसकी एक्सपोजर होगी टूवर्ड्स द सन तो वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन की चांसेस ज़्यादा होगी, स्कैरिंग डेवलपमेंट की चांसेस ज़्यादा होगी, वो टिश्यूज़ फिर वो अपनी डिस्कलरेशन में आ जाती है। So this is the treatment of abrasion. No, contusion क्या चीज़ है? The contusion is more commonly called bruise and indicates that some amount of tissue disruption has occurred within the tissue which results in subcutaneous or submucosal hemorrhage without a break in the soft tissue. Contusion is caused by a blow or fall against a hard or blunted object. Blood extravasates in the subcutaneous or submucosal tissue leading to blowish area or bruise. This is without break into the soft tissue surface. Discoloration of the skin cause ecchymosis, which is called discoloration of the skin. A contusion is an injury to the capillaries under the skin that most people refers to a bruise. A contusion को हम other words में bruise भी कहते हैं। Contusions happens when a blow or repeated impact crush and break these tiny blood vessels, causing some blood to leak out below the skin surface. जब कोई blunted और hard object के against आपका surface आ जाए तो वहाँ पर जो अंडरलाइन कैपिलरीज होती हैं वो ब्रेक हो जाती है, उसको टीयर हो जाता है। उस टीयरिंग के बाद वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ हेमाटोमा विच रिफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स, क्योंकि वहाँ पर जब ब्लड की लीकेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स में ब्रेक आ जाती है, तो अंडर जितनी भी वहाँ पर एरिया है सॉफ्ट टिश्यूज़ है उधर ये ब्लड accumulate हो जाती है। So it is basically a type of hematoma which refers to any collection of blood outside of the blood vessels. Bruise maybe appears immediately after an injury or take up to 24 hours to show. ये exactly at same time पे ये show नहीं होगा, ये या तो same time पे भी show हो सकते हैं but it may take 24 hours to show। और वहाँ पर आपको डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगी, जैसे कि हमने एकाइमोसिस की बात की, ठीक है। ऑफन एन इनिशियल कंट्यूजन विल लुक लाइक ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर, बट इट मे चेंज कलर ओवर द कोर्स ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। सेम लाइक कि ये आपको ब्लैक, ब्लू और पर्पल ऑन द इनिशियल कंट्यूजन में नज़र आएगी।
जब उस हीलिंग साथ साथ उसकी होती जाएगी तो ये अपना कलर चेंज करता जाएगा। अब इसकी कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? डिस्कलर्ड स्किन दैट लुक्स रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक, एनी कलर का हो सकता है इसमें। दूसरा ये है कि अ स्मॉल बम्प ओवर द एरिया इज इन सम केसेस, कि स्मॉल बम्प लाइक एरिया आपको नजर आएगी सम केसेस में। पेन दैट यूजुअली वर्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द एरिया, अगर उधर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उस एरिया को, कंट्यूज्ड एरिया को, तो वहां पर पेन होगा। This is the diagram which shows the discoloration, means this area is, you can say, bruise or contused area or contusion of the soft tissue or contusion of the facial structure. ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। Contusion generally requires no surgical treatment. Application of ice pack will help to stop further extravasation of blood. An elastic bandage may be wrapped around a bruised muscles to support the area and decrease swelling. This is very simple. Most contusion simply requires time to heal because there is no surgical treatment. They just need time to heal. Soft tissue contusion can take anywhere from a few days to a couple of weeks to heal. As you recover, you can follow the RISE protocol to help manage your symptoms. Like उधर जितनी भी symptoms होगी, discoloration होगा, pain होगा, swellings होगी, all these are the symptoms. So आपको RISE protocol follow करना होगा और RISE protocol के जरिए आप symptoms को manage कर सकते हैं। RISE protocol क्या है? RICE, or you can say RISE protocol or RISE protocol. R means rest the area where whenever possible, कि जो भी कंट्यूज्ड एरिया है उसको रेस्ट दे दें। आइस, आई मीन आइस, अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू द एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग। यू कैन डू दिस फॉर 15 to 20 minutes एट अ टाइम, सेवरल टाइम्स अ डे। कि आपने उधर कोल्ड मीन आइस कंप्रेस करके अप्लाई करना है फॉर अबाउट 15 to 20 minutes, सेवरल टाइम्स अ डे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। एंड सी मीन्स कंप्रेस, जितना आप उस एरिया को कंप्रेस करेंगे वहाँ पर उसकी हीलिंग्स की प्रोसेस प्रमोट होगी, वहाँ पर हीलिंग प्रमोट होगा। कंप्रेस आप किस तरह कर सकते हैं कि आप रैप्ड और बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैंडेज से वहाँ पर स्वेलिंग रिड्यूस होगी। ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट रैप इट सो टाइट दैट इट स्टार्ट्स टू इफेक्ट योर सर्कुलेशन, कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपका सर्कुलेशन भी इफेक्ट हो सकता है। एंड ई मीन्स एलिवेट, इफ पॉसिबल रेज द अफेक्टेड एरिया अबव योर हेड, दिस कैन हेल्प टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द इंजर्ड एरिया। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्यूजन you need to follow the RICE protocol, RICE. R means rest, I means ice, means कि apply cold or ice, and C means compression or compress, and E means elevation. Next आता है हमारे पास laceration. Laceration is a tear in the epithelial and subepithelial tissue and is a most frequently type of soft tissue injuries. It is most commonly caused by a sharp object such as knife and piece of glass. The tearing of mucosal tissue or skin is seen due to vehicular accidents, low velocity missile like pistol bullets or bomb splinters. The margins are contused and lacerated in deep wound. The muscles are also lacerated and devitalized. अगर epithelial और subepithelial tissue को कोई tear हो तो उसको हम laceration कहते हैं, and this is the most frequent type of soft tissue injury. It is most commonly caused by a sharp object such as knife and piece of glass. Like piece of, जितनी भी sharp objects हैं उसकी वजह से ये काज होते हैं। इसके अलावा पिस्टल बुलेट्स, बॉम्ब स्प्लिंटर्स, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स की वजह से भी ये पॉसिबल हो सकते हैं। इसकी जो मार्जिन्स होंगे वो कंट्यूज होंगे और जो डीप वुंड होगा उसमें लेसरेशन होगा। मोस्टली मसल इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो सकते हैं, मसल लेसरेट हो सकते हैं एंड डिवाइटलाइज भी हो सकते हैं। सिंपली वर्ड्स में, लेसरेशन इज टियर आर ओपनिंग इन द स्किन काज्ड बाय एन इंजरी।
Laceration may be small and need only minor treatment at home, or may be large enough to require emergency medical care. A laceration can be anything from a small minor scrape to a deep bleeding cut. In a laceration, none of the skin is missing, it's just separated. Means कि कोई skin missing नहीं होगा, tissue आपके पास remove 100% नहीं होगा, बट वहाँ पर कट ज़रूर आ सकता है. अब डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी डिग्री की लेसरेशन हो गई है. सम लेसरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सटर्नल सरफेस बट अदर एक्सटेंडेड डीप टू द into the tissues, disrupting nerves, blood vessels, muscles and other anatomic structures. कुछ हमारे पास सुपरफिशियल हो सकती है, कुछ हमारे पास इतनी डीप हो सकती है कि वहाँ पर नर्व, ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड जितनी भी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसको इन्वॉल्व कर सकता है. ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाए, देयर में बी associated injury to the underlying vessels, nerve and bones as I discussed before. The dentist frequently encounter laceration of lips, floor of the mouth, tongue, labial mucosa, buccolabial mucosa and gingiva. जितनी भी अगर डेंटल की प्रोसीजर्स हो रही है तो उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो लेसरेशन आती है, क्योंकि वो भी एक ऑब्जेक्ट की वजह से, शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से आ सकती है, एजेस की वजह से, जितनी भी हम डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स में. इसमें लिप लेसरेशंस, फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग, लेबियल म्यूकोजा, जिंजिवा, ये एरियाज हमारे पास लेसरेट हो सकते हैं. Are some picture which shows the laceration of the tongue, laceration of the lip and lower face area of the maxillofacial region. अब lacerated wound की treatment क्या है? After adequate anesthesia is provided, the surgical management of laceration involve four major steps. Four major steps हैं. These steps apply to laceration whenever, anywhere in the body, including the oral cavity. सबसे पहला है उसमें cleansing, फिर है debridement, third number hemostasis and fourth number closure. अब cleansing क्या चीज़ है? Cleansing of wound means mechanical cleansing of wound is necessary to prevent any remaining debris, and that can be performed with surgical soap or use of soft brush. Saline irrigation is then used to remove all water soluble materials. फिर है debridement. Debridement में क्या होता है? It refers to the removal of contused and devitalized tissue from the wound and the removal of jagged pieces. जितने भी jagged pieces हैं या contused or devitalized tissues उधर पड़े हैं उसको आपने remove करना है, and this is called debridement. Hemostasis means before closure of the wound, hemostasis is necessary. Contused bleeding can interfere with healing process by creating hematoma within the tissue. If bleeding vessels are identified, they should be clamped and tied with ligatures or catheterized with electrocoagulation unit. अगर आपने उधर कोई भी bleeding vessels देखी हो, आइडेंटिफाई की हो, तो आपने उसको टाइट करना होगा विद द लाइगेचर्स, क्योंकि उधर जितनी भी ज़्यादातर ब्लीडिंग और होगी तो वहाँ पर हेमाटोमा के चांसेस होते हैं. एंड फिर आता है क्लोजर. वंस द वुंड हैज़ बीन क्लीन, डिब्राइड एंड हेमोस्टेसिस इज अचीव्ड, द लेसरेशन इज रेडी टू बी क्लोज विद sutures. However, not every laceration in the oral cavity must be closed with suture. Mild not to be closed, but deep should be closed immediately. अब डिपेंड करता है कि उधर लेसरेशन कितनी डिग्री तक हो गई है. अगर सुपरफिशियल लेसरेशन है तो और माइल्ड से लेसरेशन है तो उसमें क्लोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर डीप लेसरेशन हो गई है तो इट विल बी डेफिनेटली नीड टू बी क्लोज्ड. Thorough cleansing, minimal debridement, removal of foreign bodies and proper suturing are early as possible should be done. Closure should be done with multiple layers, like आपने separately muscles को, separately structures को आपने और tissues को suture करना होगा और close करना होगा. Muscles, dermis, epidermis, submucosa and mucosal closure. Soft tissue wounds associated with dentoalveolar trauma are always treated after management of hard tissue injury.
अब देखिए, अगर कोई डेंटो एल्वुलर ट्रामा हो गया हो या कोई सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा हो गया, उसके साथ एसोसिएटेड हार्ट टिश्यू ट्रामा भी हो, तो आपने सबसे पहले हार्ट टिश्यू ट्रामा को मैनेज करना होगा, इसके बाद आपने सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा की तरफ आना होगा. Dear viewers and students, all the contents are taken from the Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery by James R. Herb, chapter number 24, Soft Tissue and Dentoalveolar Trauma. Thank you very much, dear viewers and students. That was a session about soft tissue injury, maxillofacial trauma.